Welcome back, everybody. Hello. How's it going? So today we're going to be watching a quick little video over here. We're going to be watching this particular one from CNBC. It doesn't really matter. This clip is going around all over the place, but it's essentially Donald Trump supposedly telling Tim Cook that he shouldn't build iPhones in India anymore. I got told in some of my comments and on my video, on the last video that I posted, that Trump is doing this. And you know what? Let's actually sit down. Let's watch the video and see what he says on the issue. Yeah? Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest Okay, so tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from India's offering a deal to charge no tariff. the highest tariff. You couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. They cut off. I want to hear the whole thing. All right, I searched around to find the whole deal. It looks like it's a snippet from whatever he said in Qatar here. So we're going to skip to the point and actually listen to the entire statement that he said. We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India's... Okay, so he's saying there you can build in India to make plants in it, to make phones in India, right? He could build an Indian plant to make phones in India. What essentially I'm assuming is here is Trump is trying to push Tim Cook to bring production of the iPhone into the USA, right? The highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest... And this is a supposed deal that's going to be happening soon between India and the USA. I don't know too much more about it. Tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. So it'll be... Okay, so it is like I said, they cut off where he was saying that Apple is going to be increasing the production. So that's basically he's basically trying to strong arm Tim Cook into making the iPhone in the USA. Great. So I really think we've gone from a laughing stock 6 months ago to the hottest country anywhere in the world, and that's not just in business, that's in everything else, and it's psychologically hot too. And I just want to thank everybody for being here. I want to thank the media. So wait. Why would they cut off this last bit? Laughing stock 6 months. I sold here, and they're going to be upping their take care. Now you got to build us. We're not interested in you building in India.
This is basically where all those other clips cut off, right? India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. They're okay. So they're cutting off that last little bit about him saying the Apple is going to be up in the production in the United States. So it's essentially he's essentially strong arming he's strong arming Tim Cook into building these iPhones in the USA. Unfortunately, on my search through X, formerly known as Twitter, I saw a lot of people saying that he's doing this to help China again. That's not the case. Trump wants these iPhones built in the U.S., right? He wants these iPhones built in the U.S. I wonder what this has to say. These comments. India also don't need iPhone. I also want vote for this man again. Trump jealous of Indian growth. Very delusional man, you sir. Yeah, there's going to be a lot of talk about this. Let's actually bring up the video that was linked to me originally. So this was the original video that someone had linked to me. Donald Trump blocks Apple's India move. Apple told to stay away from India. India strikes back. So we'll give this a quick little look. एक स्टेटमेंट उन्होंने अनर्गल स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रंप ने समझौता करवाया था। हालांकि इंडिया ने उसके ऊपर फिर कंफर्मेशन दिया कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था। कल ही मैंने इस चीज़ को कवर भी किया था और उन्होंने कह दिया था कि मैं ट्रेड की धमकी दी थी और दुनिया भर की बातें उन्होंने कर दी थी। अब एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दे दिया जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बात ट्रेड की आए तो ट्रंप के स्टेटमेंट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ट्रंप चाइना और इंडिया को ट्रेड के मामले में सेम पेज पर रखते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि इंडिया क्या कर रहा है, चाइना। Well, yeah, I mean, to Trump, the USA is always going to come first, right? That's just the way Trump is. क्या कर रहा है, या चाइना कौन है, या इंडिया कौन है। उनको सिर्फ एक बड़ा मार्केट दिख रहा है और उस बड़े मार्केट के हिसाब से ट्रंप के स्टेटमेंट्स जो हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने आईफोन के टिम कुक से बात करी, एप्पल के टिम कुक से बात करी और मैं कहा कि जो आईफोन का प्रोडक्शन आप भारत में कर रहे हैं इसको भारत में करने से हमें कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप इसको भारत में करिए, आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स में करिए। पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप है इस समय पर कतर के अंदर और कतर के अंदर उन्होंने कहा कि देखो मैंने टिम कुक से बात करी थी और टिम कुक जो अपने प्लांट्स को बना रहे हैं भारत में, मैंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं टिम कुक के उस प्लांट को जो आईफोन के प्लांट्स वो भारत में बना रहे हैं उससे। अब देखिए आईफोन के पूरे प्रोडक्शन में मैंने इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कि उसका जो प्रोडक्शन चेन होता है उसमें सबसे मेन काम असेंबलिंग का होता है। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके असेंबलिंग, उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स वो सब की जरूरत होती है। चाइना उसका सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना में सबसे ज्यादा आईफोन की असेंबलिंग होती है। जो आईफोन आप चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ, कोई भी चला रहा होगा, अगर आईफोन चला रहा होगा वो I'm not using an iPhone. 90% I'm not using an iPhone. He says everyone uses. I'm not using an iPhone. चांसेस हैं कि वो आईफोन चाइना से बन के आया है। बहुत कम बाहर के देशों में उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसका असेंबलिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग तो क्या, असेंबलिंग उसका होता है। मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। The reason why it's being produced and assembled in China and now a lot of it's being moved to India. I mean, a lot of it was being moved to India in the past as well, right? Like the iPhone SE was being produced and assembled in India. The reason why it's not built in the USA is because the cost of labor would be a lot higher. These like China here, the cost of labor in China is like minuscule in comparison to the cost of labor in the USA. आप चाहोगे तो उसको पिन कर दूंगा मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चाइना को पहले तो चाइना से उनको टिम कुक को क्या था कि एप्पल की जो प्रोडक्शन थी उसको चाइना से बाहर निकालना था क्योंकि वो ओवर डिपेंडेंट हो गए थे चाइना पर। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसको बाहर निकालना शुरू किया और उनको सबसे अच्छा मार्केट, जो सबसे अच्छा जहाँ पर लेबर मिलना आसान हो, लेबर लॉस थोड़े ढीले हों, जहाँ पर अच्छी फैक्ट्री सेटअप की जा सके, जगह मिल जाए, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाए, ऐसी कंट्री उनको भारत नजर आई दूसरी बार। और एक तो भारत बहुत बड़ा मार्केट खुद में भी है और फिर यहाँ पर एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है तो लेबर मिलना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी काम जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। तो इसलिए ये इन्होंने पूरा शिफ्ट किया टिम कुक ने और ये इंडिया की तरफ देखना शुरू किया। धीरे धीरे फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन ये सब नामी कंपनी आने लगी भारत में और फिर आईफोन का प्रोडक्शन शुरू करने लगी। पिछले साल हमने अच्छे खासे अमाउंट में आईफोन्स बनाए हैं भारत से। हालांकि वो चाइना के कंपैरेटिव तो कुछ भी नहीं है लेकिन एक शुरुआत के लिए बनाया गया है पिछले साल। तो अब जब वो अपने प्लांट्स को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ही शॉकिंग स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल अभी इस समय पर कतर में है और कतर में बोलते बोलते उन्होंने बोला कि मेरी टिम कुक से बात हो रही थी, टिम कुक एप्पल वाले टिम कुक, उनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और दिक्कत जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो टिम कुक ने वो पलट करके बोला कि भाई क्या दिक्कत है आपको, मुझसे बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिक्कत ये है कि जो तुम अपने पूरे सारे आईफोन के जो प्लांट्स हैं, जो एप्पल के प्लांट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और असेंबलिंग प्लांट्स जो तुम सेटअप कर रहे हो भारत में, मुझे इस चीज़ से दिक्कत है। उसको तुम भारत में
सेटअप ना करके उसको आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो प्रोडक्शन करिए ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को उसका फायदा हो। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की राख तो लाते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या यूनाइटेड स्टेट्स के पास उतना लेबर अवेलेबल होगा? क्योंकि यही एक कहानी है एप्पल को लेकर के कि जब इनको स्क्रीन लगवानी थी, जब नया नया पहला प्रोडक्ट आया था एप्पल का आईफोन जब पहला आया था उसमें स्क्रीन लगवानी थी, इस पूरी कहानी मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताई थी। तो टाइम नहीं था उनके पास, और यूनाइटेड स्टेट्स की मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनीज हैं जिनके पास लेबर होते हैं उन्होंने मना कर दिया कि पॉसिबल ही नहीं है सर, हो नहीं पाएगा। फिर वो चाइना गए, चाइना ने वो काम करके दिखा दिया, मतलब रातों रात, मतलब 3-4 दिनों में 8,000 वर्कर्स तक पूरा हायर कर लिया और काम शुरू हो गया और उनका काम डन भी हो गया। सेम स्टोरी इंडिया की है, इंडिया में भी Yeah, it's because these countries have this infrastructure already set up. This infrastructure is not set up in the U.S. as of right now. But Tim Cook, like he said, Tim Cook's investing a ton of money in production in the USA, and I think unfortunately a lot of this is being blown out of proportion, right? I feel like what's essentially being said is Trump is talking to Tim Cook saying, hey, you're upping your production in the US. Why don't you put even more money into your production and bring the iPhones here as well? There's that infrastructure is already becoming set in place in the future because Apple is bringing more production to the US. I don't know, man. Like I feel like this is unfortunately being blown way out of proportion. भी इसी तरीके से आपको बड़े आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, स्किल्ड लेबर्स मिल जाएंगे, काम करने के लिए लोग जो हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें उनको आपको इंडिया में मिल जाती है। क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड कर पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ट्रंप को पता नहीं है, या ट्रंप उस जवाब को देना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स दे करके चाहते हैं कि भाई आओ तुम लगाओ, तुम मैन्युफैक्चर करो यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल उसको सोचना नहीं चाहते हैं। तो ट्रंप ने वही कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में लगाइए, आप भारत में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं, उससे हम कुछ नहीं सोचना चाहते। भारत एक बड़ी कंट्री, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी, आपको जरूरत नहीं है वहाँ पर प्लांट वांट लगवाने की। अब ये खबर एक्चुअल में आई थी अप्रैल 2025 में, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप को इससे प्रॉब्लम हो गई थी। अप्रैल 2025 में रूटर्स ने इसको कवर किया है कि एप्पल जो है वो अपना आईफोन का मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्शन है, जो असेंबलिंग है, उसको वो शिफ्ट कर रहा है भारत के अंदर। पहले ये चीज़ चाइना में होती थी, और चाइना में जब होती थी तो लगभग 90-95% असेंबलिंग आज की डेट में भी चाइना में होती है। तो अब हुआ क्या था कि कोविड के टाइम Yeah, I don't like that everything's produced in China personally. I'll be 100% brutal and honest with that and upfront with that. I think stuff being produced in China is bad because they are essentially using slave labor in China. पर चाइना की वजह से एप्पल को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद जो चाइना की गवर्नमेंट का रुख रहता है उसको भी देखते हुए पहले से ही एप्पल काफ़ी सतर्क हो गया है, क्योंकि जो इलॉन मस्क के साथ हुआ वो एप्पल के साथ भी हो सकता है। यही सेम कहानी इलॉन मस्क के साथ थी। इलॉन मस्क ने अपना पूरा टेस्ला का बिजनेस सेटअप किया चाइना में, प्लांट सेटअप किए, इलेक्ट्रिक कार्स बेचना शुरू किया, बहुत ज़बरदस्त मार्केट को होल्ड किया, पकड़ लिया। चाइना ये सब देखता रहा, इलॉन मस्क को हेल्प करता रहा जब तक उनका बिजनेस खड़ा हुआ, लेकिन साइड बाय साइड चाइना ने अपनी चाइनीज कंपनी बिल्ड योर ड्रीम BYD को भी खड़ा करना शुरू किया, पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट देना शुरू किया। वंस द कंपनी इज एट पार विद टेस्ला, उन्होंने टेस्ला को फिर अंडरमाइन करना शुरू किया और BYD को सपोर्ट करना शुरू किया। किसी देश का गवर्नमेंट अगर अपने देश की कंट्री को पूरी तरीके से सपोर्ट दे दे तो उससे बाहर की कंपनीज को मतलब कैसे ही सामना कर पाओगे। तो फिर इलॉन मस्क हैड टू कम आउट, और इसलिए आप यूएस में जो उनकी एंट्री देख रहे हो वो उस वजह से ही उनकी एंट्री हुई, और वहां के मतलब मार्केट में BYD तेजी से उनका मार्केट शेयर खाते चला गया और आज की डेट में मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करता है। It's a true story that did happen. Elon Musk built a bunch of plants in China, and they basically undercut him, stole his technology, stuff like that, yada yada yada, forced to exit China. चाइना का BYD, तो वही डर एप्पल को भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एप्पल अकेला किंग है मोबाइल फोन्स की दुनिया में, और ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे अब तो हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मोबाइल फोन्स की दुनिया में। तो ये बात एप्पल बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो चाइना पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। तो इसीलिए उसने इंडिया को एक मार्केट की तरह देखा, इंडिया को देखा कि यहाँ पर एक सेटअप किया जा सकता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। सिर्फ इंडिया ने, और भी कई कंट्रीज में उसने देखा, वियतनाम को देखा, फिलीपींस को देखा, इन कंट्रीज की तरफ भी एप्पल ने देखना शुरू किया, जिससे भारत का काफी फायदा था। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हो गई है भारत से दिक्कत, और ये चीज जब अप्रैल में बाहर आई तो डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। I don't think it's India. I don't think Donald Trump has a problem with India. I think this is the issue. I think this is where people are getting stuck on. He doesn't have a problem with India. I think that's a false narrative that people are creating. He simply, the only thing he has in his brain right now is moving manufacturing and production to the USA. That's the only thing going on in Donald Trump's brain. It's not that he has a problem with India. सेम चीज उन्होंने जो है कि चाइना के साथ भी किया था।
डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ जो किया था, वो चाइना से उनको दिक्कत तब हुई थी जब उन्होंने देखा कि एप्पल का सारा जो प्रोडक्शन है वो चाइना में हो रहा है। तो जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब उन्होंने सेम राग चाइना के खिलाफ लापना शुरू किया था कि देखो, चाइना जो है वो हमारा जो जियो पॉलिटिकल दुश्मन है, और उसके यहाँ पर जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इससे आप यूएस का इंटरेस्ट अंडरमाइन कर रहे हो, ये सब वो उस टाइम पर बोलते थे। वैसे ही वो पीछे पड़ चुके हैं भारत के। अब ट्रंप को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भारत से, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं भारत को लेकर के? तो उन्होंने खुद के इस चीज़ को कहा कि भाई, He again, he doesn't have a problem with India. He's trying to strong arm Tim Cook into moving all iPhone manufacturing to the US. It's plain and simple. That's what he has in his brain. भारत से मेरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो भारत का टैरिफ रेट है। भारत वो कंट्री है जो कि दुनिया की जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए भारत के मार्केट में घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, और इसीलिए हमने उनके I mean, ऊपर that's रिटेलिटरी टैरिफ true. लगाया। तो एक पूरा टैरिफ वॉरफेयर चल ही रहा है। हालांकि ट्रंप ने इस चीज़ को भी कहा कि इंडिया ने हमें ऑफर किया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने टैरिफ रेट्स को कम करने के लिए या हटा देने के लिए, तो वो अभी निगोशिएशन चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एप्पल जो है वो अपने प्लांट्स भारत में ना लगा करके इसको यूएस में लगाए। अब भारत में अगर एप्पल के प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप से होती है आईफोन की, और दूसरी तरफ एक और कंपनी है जिसका नाम है पेगाट्रॉन, ये भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन फॉक्सकॉन मतलब पूरी तरीके से समझ लो आप, उसने पूरा टेंडर लिया हुआ है और वही सारा असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो फॉक्सकॉन ने अपना अपना एक प्लांट जो है वो जो साउथ इंडिया वहाँ पर लगा दिया है। पेगाट्रॉन को टाटा के एक ग्रुप ने खरीदा था, टाटा के एक विंग ने खरीदा था, तो पेगाट्रॉन भी अपने प्लांट्स लगा रहा है। पेगाट्रॉन के भी एक प्लांट लग चुका है ऑलरेडी, और भी सारे प्लांट्स का उनका जो प्लान है उनको लगाने का। तो फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, ये सब जब आ जाएंगे भारत में और अपने प्लांट्स को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे जो चीज़ अभी चाइना में हो रही है वो भारत में शिफ्ट हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच में ट्रंप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए बन करके खड़े हो गए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट करके बताइएगा। पर वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का प्रीलिम्स मॉक ड्रिल जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। 13 से 15 मई को जीएस के टेस्ट थे। All right. Um, I'm curious to see what some of this says. Trump 2.0 itself is a problem to the world. India should focus on value additions rather than focusing on a single company. Now iPhone sales go down in India. Local production is the only way to compensate the sales. India won't buy this high cost. Well, Trump did say, I mean, we saw it, right? When in Trump's statement, Trump did say they could build phones there for Indians. Let's pull that back up really quick. Highest, and now they're saying no tariff. But I said to top, so we go from the highest, if you want, to building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff. You can build in India to take care of India. So he is still saying the iPhone production could happen in India. It's just the iPhones being produced in India should be sold to the Indians. He wants Apple to produce iPhones for US citizens in the US. That's what it comes down to. That's what he wants. De-dollarization. I mean, Bitcoin's going to take over, right? This is expected from Trump. It's time for India to make our own YouTube, Instagram, Facebook. India, I mean, like China. That's what China did, right? India is a place of talent. Let promote merit and be self-dependent. We should focus on our economy, education, and technology. Donald Trump said that Apple should not open its factory in India. So I say that we should not buy Apple phones. Let my India become great again. I think we had to stop buying iPhones for this situation. Then the U.S. know what is the power of India. Now the opportunity, Tata, make a good phone. I think the pressure tactic for ongoing trade negotiation as India moves to WTO against tariff. It's time to start the India's Mango phone. That'd be funny. Excellent opportunity for our own brand. India must block Amazon, eBay in India. What? Why? That's weird. Like everything runs off of Amazon Web Services, like this person says here. Like almost the entire world runs off of Amazon Web Services. Focus on parts plus supply chain rather than one single company. At the end of the day, national interest first. This is a consequence of India's reciprocal tariff levied on USA steel. Let's stop buying Apple products in India. We should go for Samsung. I mean,
Samsung, Google Pixel, they're way better than iPhones anyways, right? Ban Apple product in India. This is the perfect solution. First Tesla and Meta, Google, YouTube ban. Then then India should also ban Apple fruit. Trump's ego has been hurt because India refuses his involvement in ceasefire negotiations. I don't think that has anything to do with it at all. I think it just comes down to he's trying to strong arm Tim Cook into building iPhones in the USA. And he even said right here, building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. you can build in India if you want to take care of India. So he is literally saying, Apple can still build in India, just the iPhones built in India need to be sold to the Indians. That's basically what he's saying right there. Of course, we have to extrapolate. We didn't sit down and listen to his entire conversation. He doesn't go into further detail than this, but that's essentially what it is. I don't know. I think this is a unfortunate circumstance of media pushing a narrative way out of proportion. I really do. Especially them cutting off that last little bit about him saying he wants them to build in the USA. I don't know. It's Trump. Trump's weird. Trump's a weird one. I'm going. Take care. Goodbye.